اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Assalamu alaikum. My name is Zainab and I'm the MC for today's Majlis. First of all, we would like to start our Majlis with Hadith Kisa by Bosi Mahdi. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. You're gonna have to hold it. Okay. Salawat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah Ansari. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقال أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة إن إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأسرته بالكساء اليماني فغطيني به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتله كأنه بدر في ليلتي وتمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وتحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتدعن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي حسين قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبا كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد أخو السلام عليك يا من اختار الله أتدعن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله
فقلت وعليك السلام يا أبي الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبا كأن راها كأنها رائحة أخي ويبني عن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إنهاها مع ولدي تحت الكساء. ف- فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتدعون لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لحوضي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدعون لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي وقد أذنت لك. فدخل تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذت أبي رسول الله بطرف الكساء وأومع بيده اليمنى إلى الصلاة وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يعلنهم ويحزن لي ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن هادهم ومحب لمن حابهم. إنهم مني أنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي أجهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكيني وسماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مبنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي وأن نبوتي دين رسالتي هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط منه جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلم يكريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا ليجلكم ومحبتكم وقد دنت لأن أدخل معكما تحت فهم تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين ويا وسيء الله إنهم قد أذنت لك فدخل مع جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد ها إليه يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس وأهل بيتي وطهرتم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم تحهم الرحمة وهفت به الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا وقال علي إذا والله فزنا فذلك شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة النجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرجت الله هماه ولا بخر ولا طالب حاجة إلا وقضت حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وسعيتنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعيتنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Before I continue the Majlis, can I please ask everyone to be quiet? Now I would like to invite Khadija Fatma to read a surah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Big loud voice. Yeah, but yeah.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Now I would like Ibad Ali to read Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Big loud words. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. اللهم صل على محمد Muhammad. Now I would like to invite Wahaj Ali for the Quran. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Big loud voice, okay? No one should be talking. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Now I would like to call Hussein Jafri for Quran. Salawat. Allahumma salli ala. Big loud voice. صلوات. Allahumma salli ala. Today our reading 13 ayats of Surah Al-Ghashiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة صدق الله العلي العظيم. Now I would like to announce Ayan Musa to read Quran. Salawat. Allah. Big loud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت إن كان أنا الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فلنجع نادية سنجع الزبانية كلا لا تهب واشتق واقترب. Okay. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Now I'd like to call Hassan Abbas. Salawat. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. Now I would like to call Hussein Abbas for Quran recitation. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Speak loud voice. إنا أعطينا كالكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك الأبتر. صلوات. Now I would like Muhammad Sulaiman to read the Quran. Salawat. Speak loud voice. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يره أحد يكون أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياته هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Now I would like to call Ali Abbas. Ali Abbas. Is Ali Abbas here? Okay. Okay. Next we're going to do Muhammad Abbas. Salawat. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Okay. Read nice and loud. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين صلاتنا بالقرآن وأجرنا للنانين بالقرآن وأجرنا جانا بالقرآن.
صل على محمد وآل محمد وعجل. Now I'm going to call Hussein Sanasra for the Quran. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Big loud voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الذين آمنوا والعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه الشريف. Now can I please have Batul for recitation? Batul? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكيف ليسان ولي وحبس وقائد وناصر ودليل وعين حتى الزكاة وتمتعه فيها طويلا سلبات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. Now I'd like to call Amna for recitation. Amna? Big loud voice. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. Anyone recite the Lord's Salawat? Everyone, are we listening? Yes. Are we listening? Yes. Okay, no making noise. Recite the last salawat. Okay, now I'd like to call Mohsin for recitation. Oh, big loud voice. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. Can I now have Husseini for recitation? Is he here? No? Okay. That's it with the recitation. Now I'd like to call Ayana Fatima for Sur Salam. Salawat. صل على محمد وآل محمد صلوات.
हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। अरमान पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रास आई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाल कर परवान चढ़ाया, वो गेसुआ ला है मेरा खून में नहाया, ये क्या हुआ दिलबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना दूं, बस एक झलक सर की सगरा को दिखा दूं, बेचैन थी ख्वाहर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। माँ तेरी जुदाई के तेरी जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी, अब क्या करूँ जी कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। सलावत। Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Now I'd like to call Mir Ali for salam. Ya Ali, Ya Ali. लो गई गई निहाई, लो काफिला चला सर जब हनी की सही
Sakina Baba Kusariya. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now I'd like to call Iman Zahra for salam. Salawat. Iman Zahra. कहती थी को परीम सलवात Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra, Ya Fatima Zahra. छुड़वा दो हमें गम से ही वक्त करम है या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है या फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा औलाद की नेमत से है महरूम जवाएं बेसीग चुने पे वो करती है दुआएं उम्मीद करम आपके ही बाबे करम है या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है छुड़वा दो हमें गम से ही वक्त करम है या फातिमा ज़हरा तुम्हें बच्चों की कसम है सलवात Now I'm going to call Hassan for recitation. Ya Ali. Big loud voice. Allahumma kull bismillahirrahmanirrahim Allahumma kull waliyaka hujjati hasan sarwatuka alayha wa ala bahe siyajita tewafi kull sa waliya wa sa waqaida wala asra adlina faina hatta huskina أرزقك توبة وتمتع فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات. That's it with the source salam. Now I'd like to invite Wali to recite a speech. Salawat. Big loud voice, okay? Big loud. Assalamu alaikum. Today, I want to share a story about a very special and brave person named Hazrat Abbas alayhi salam. His story is one of the courage, loyalty, and selflessness. Hazrat Abbas was the brother of Imam Hussein, and they belonged to a very respected family in Islam. They cared deeply for each other. Hazrat Abbas was known for his incredible strength and bravery. In Karbala, when Hazrat Abbas saw children suffering from thirst, he decided to go and get water for them. Even though he knew it was dangerous, he took a water bag and rode his horse to the river. He
He bravely fought many enemies and managed to fill the water bag. However, on his way back, they attacked him because they didn't want him to bring water to his family. Hazrat Abbas fought off courageously, but he was badly injured and couldn't make it back with the water. Despite being very thirsty himself, he never drank any water, thinking only of the children and his family. Hazrat Abbas showed us how to be incredibly brave and selfless. Even in the face of great danger, he thought about others before himself. So whenever you feel scared or face a tough situation, remember Hazrat Abbas and his bravery. He reminds us that being kind, loyal, and courageous are some of the most important qualities we can have. Please recite the salawat. Allahumma. Now I'd like to call Sayyida Batul for a short speech. Salawat. Ya Ali. Ya Ali. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت أناته وهم الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب اللهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقاله الحق. तमाम तारीफ़ें उस माबूद बरहक के लिए जो अज़ीम है, रहीम है, करीम है, अता करने वाला है, जो मालिक कुन फ़यकून है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जिसकी हम्द करता है, और लायक दुरूद व सलाम है वो पाकीज़ा तरीन हस्तियाँ जिनके लिए उस अज़ीम रब ने इस हसीन कायनात को खल्क़ किया। और बहुत नसीब है हम लोग जो इस कायनात की मलका यानी बीबी फ़ातिमा ज़हरा की दुआ और अज़ादारान इमाम हुसैन है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की है ज़माना हुसैन का। 28 सफ़र इमाम हसन मुज्तबा से मंसूब है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और देखा जाए तो इन जैसे तो नाम भी किसी की नहीं है। हसन लिखा तो हुसन पढ़ सकते हैं, हुसैन लिखा तो हसीन पढ़ सकते हैं, और जहाँ कोई खूबसूरत ना हो तो वहाँ कहते थे बहुत खूबसूरत है, और जहाँ सभी खूबसूरत हो सभी सखी, और वहाँ कहा जाए सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो है इमाम हसन मुज्तबा। मौला ने नहजुल बलागा में पेश किया कि लोग 4 तरह के हैं। पहला सखी जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, दूसरा बखील जो सिर्फ खुद खाए और दूसरों को ना खिलाए, तीसरा लाइम जो कहे मैं खाऊं ना खाऊं किसी को खाने नहीं दूंगा, चौथा करीम जो कहे मैं खाऊं ना खाऊं सबको ज़रूर खिलाऊंगा।
अहले बैत करीम है और अहले बैत जो करीम है उनमें सबसे करीम इमाम हसन मुज्तबा। रिवायत में मिलता है कि इमाम हसन मुज्तबा इंतहाई करीम कि आपका दस्तरखान मुसलसल 24 घंटे चलता रहता था। वो नहीं कहते थे रात का वक्त है क्यों आ गया, बल्कि कहते थे कि उसको लाजमन खिलाओ। रसूलुल्लाह ने एक मौके पे इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों को अपने जानों पर बिठाया और फिर अपने कंधों पर सवार किया तो कहा, मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, चाहे खड़े रहें चाहे बैठ जाएं। गोया इमाम हसन सुलह करते या इमाम हुसैन जंग करे, इमामत की मंजिल एक ही है। इमाम हसन ने डर के सुलह नहीं की थी, बल्कि अमीर शाम ने सादा कागज़ भेजा था कि जो शर्त लिखे मुझे मंजूर है। हसन की सुलह पर जो मुतर्रिज़ है अहले जहां, हसन की सुलह पर जो मुतर्रिज़ है अहले जहां, इन्हें ज़माने का मालूम हालचाल नहीं। अली कलाल करे सुलह मसलहत होगी, अली कलाल करे सुलह मसलहत होगी, जो मोरे जंग से मुना फातिमा कलाल नहीं। इमाम हसन की फरासत ने अमीर शाम की असलियत बेनकाब कर दी, क्योंकि जो सुलहनामा गया उसकी पहली शर्त थी कि अमीर शाम किताब खुदा और सुन्नत रसूल की पाबंदी करेगा। इमाम हसन की इस शर्त ने वाज़ेह कर दिया कि अब तक अमीर शाम का हुक्म मानता था और सुन्नत रसूल की पासदारी करता था। मेरा दिल चाहता है कि मुखालिफिन को बार बार बताऊं कि इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, बल्कि इमाम हसन से सुलह की गई और इमाम हुसैन से जंग कराई गई। बहुक्म हक कहीं पे सुलह कर लेते हैं दुश्मन से, बहुक्म हक कहीं पे सुलह कर लेते हैं दुश्मन से, कहीं पे जंग खामोशी जवाब जंग होती है। ज़माना ये सबक ले फातिमा के दिल के टुकड़ों से, ज़माना ये सबक ले फातिमा के दिल के टुकड़ों से, कहाँ पर सुलह होती है कहाँ पर जंग होती है। तो ये कहना गलत ना होगा कि तशखीज़ मर्ज़ का काम इमाम हसन ने किया है और इलाज मर्ज़ का काम इमाम हुसैन ने किया है। करबला की उम्मत की बीमारी का इलाज है और उस नुस्खे को क़यामत तक जारी व सारी रहना है। सलावत। अब आते हैं इमाम हसन के मसाइब की तरफ। हसन मुज्तबा बहुत मज़लूम इमाम है। किसी ने इमाम हसन से पूछा कि जिस तरह मौला आप माँ को याद करके रोते हैं, इस तरह तो कोई बेटा माँ को याद करके नहीं रोता है। नजफ़ अशरफ के एक बहुत बड़े ज़ाकिर थे जो हर वक्त मसाइब पढ़ा करते थे। मजलिस मुख्तसर होती थी लेकिन मसाइब बहुत तुलानी हुआ करते थे। मजलिस पे मसाइब ज़्यादा ताकीद करते थे। तो एक दफ़ा इमाम हसन की मजलिस पढ़ के घर गए तो तो कहते हैं, मैंने उस रात इमाम हसन को ख्वाब में देखा कि मौला ने मुझसे कहा कि ए ज़ाकिर, तुम मेरे सख्त तरीन मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? तो तू बाकी तमाम ख़ानदान अहले बैत के सख्त तरीन मसाइब पढ़ता है। तो कहा, मौला मैं आपके रोने वालों को बताता हूँ कि एक ही तो इमाम है जिनको जब जहर दिया तो कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। कलेजे के टुकड़े भी कभी बाहर आया करते हैं। इमाम के कलेजे के टुकड़े हो गए थे। मौला ने कहा, नहीं, ये मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं है। मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ कि हमारे एक इमाम है जिनका जनाजा घर से गया और कुछ ही देर बाद वापस आ गया। कभी जनाजे भी घर वापस आते हैं। तो इमाम हसन मुज्तबा ने कहा, ये मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं है। मौला मैं ये भी बताता हूँ कि मौला जब आपका जनाजा गया तो तीरों के साथ वापस आया। इमाम ने कहा, ये भी मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा, मौला मैं ये भी बताता हूँ कि जब कोई किसी को बाहर अजियत देना तो वो घर है तो उसको घर में सुकून मिलता है आके, लेकिन हमारे एक इमाम हैं जिनके घर में जौदा बिनते असस जैसी बीवी थी जो जहर देने वाली थी, जिसने मौला को 7 दफ़ा जहर दिया। मौला ने कहा, ये भी मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहा, फिर मौला मैं नहीं जानता कि आपके कौन से सबसे सख्त मसाइब हैं। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा, ए वाइस, मेरे जब रोने वाले के सामने जाना तो कहना, हसन मुज्तबा ने कहा, ये मेरे सबसे सख्त मसाइब है। मदीना शहर था, शहर की एक गली थी, गली का एक
दरवाज़ा था, उस दरवाज़े पे आग लगी थी और जलते हुए दरवाज़े के पीछे इमाम हसन मुज्तबा की माँ खड़ी थी। मेरे रोने वालों से कहना, जब जलता हुआ दरवाज़ा गिरा तो मैं माँ को देख रहा था। मेरी माँ ने एक मर्तबा दरवाज़ा रोकना चाहा। जब दरवाज़ा गिर गया, आवाज़ दी, फ़िज़्ज़ा इलैकी फ़िज़्ज़ा, मेरी मदद को आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हमें इमाम के नासिरा में शामिल फरमाए और हमारे सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु صل على محمد وآل محمد. Now I would like to call Hadi for a speech. I want everyone to be quiet and sit down. Big loud voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone. Tonight I will talk about evil. First of all, I want to ask you a few questions. Do you think bad things or evil things happen in the world? Yes. Yeah. Like bad things are happening in Palestine. Do you believe everything is created by Allah? Okay. So, do you think evil is also created by Allah? Well, that's a more complicated question. There are two schools of thought or opinions on this matter. First, yes, since everything is created by Allah, so evil must have been as well. Second, Allah is all good and He only created good. Now, I want to ask you, what is cold? The absence of heat. What is darkness? The absence of light. Similarly, evil is the absence of goodness. So Allah only created goodness, but when we don't do what we are supposed to and deviate from the right path, then evil comes into being. But you might ask why Allah allowed evil to exist. Allah is in control of everything. Why He doesn't stop evil? There can be two answers to that question. If there is no evil, you can't appreciate goodness. And second, what we think is evil can in fact be good for us. I will tell you a story to make this more clear. There was a king who had an assistant, his wazir or minister. Now, this minister, even if anything bad happened, anything at all, he would always say, Khair inshallah, meaning there must be some good in it from Allah. The king used to get annoyed by his habit, but never said anything. One day, this king was cutting fruit, and he cut his finger by accident, and he lost his finger. The minister once again said, Khair inshallah. The king got very mad and said, I lost my finger, and you are saying Khair inshallah. This is complete nonsense, and put him in jail. After a few years, the king was hunting and in a jungle, and a local tribe caught him. They said that they would sacrifice him to their gods. They didn't believe that he was a king. But then one of the persons said, he is missing a finger. We cannot sacrifice him as he is imperfect. And according to our rule, the person we sacrifice shouldn't have any defect. And they let the king go. Now the king realized that his wazir was right, and he apologized to him and freed him from the prison and elevated his rank. So my friends, even if something bad happens to us, we should always believe that there must be some good in it from Allah. But we also know that the absence of good in humans also gives rise to evil. And there were people in Karbala who were completely devoid of any goodness and did the biggest sin of all, massacring the family of our Prophet. But there was one man on the day of Karbala who had to witness the martyrdom of his son. Thank you. A historical narration says, Imam Hussein was in the mosque of our holy Prophet with Hazrat Ali Akbar and some members of Bani Hashim when a man walked into the mosque
as he had just become Muslim from Christianity, and he wanted to meet Imam Hussein. He met the Imam and said, "I have come to declare that I am Muslim." And the Imam asked why. He says, "Because I saw your grandfather Rasulullah in my dream, and I saw Prophet Isa in my dream. And Prophet Isa told me that he is on the right path, and you must continue your religion with him." The Imam said, "Oh man, do you remember what the Prophet looked like in your dream?" He said, "Yes, that image is very clear. I can still see him in my head." And the Imam said, "Oh man, do you want to see someone that looks like the Prophet?" And he said, "Absolutely, I would love to see that." And the Imam calls Hazrat Ali Akbar, and he says to the man, "Does he look like the Prophet?" And he says that he is an exact copy of the Prophet, and falls unconscious. Now, my friends, Ali Akbar is the same man who on the day of Ashura, on the plains of Karbala, was brutally martyred right before his father's eyes. And when the spear was stuck in his chest and the wood fell off, but the blade was stuck in his heart. And Hazrat Ali Akbar cried out, "Peace be upon you, O father." Imam Hussein came rushing down to the battlefield and said, "My dear son, Ali, life is not worth living without you." He tried to pick up his son, but he couldn't, because he was very heartbroken and didn't have any strength in him to lift young Ali Akbar's dead body. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. صل على محمد وآل محمد. Now I would read a speech. Please read a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Do not suppose those who are slain in the way of Allah to be dead. No, they are living and provided near for their Lord. Surah Ali Imran, ayah number 169. Salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight we are gathered on the 8th night of Muharram, soon approaching the night of Ashura. Tonight will be the last Majlis for children. I would like to thank everyone who participated in making Bibi Fatima happy. Tonight, I want to talk about something that we all have. Friends. We all have friends who we know and love. However, our friends can't be with us forever. We can't have them by our sides every single second of our lives. Not even our parents can be with us at all times. There's only one person who can be with us at all times, and that is our Imam, Ajallallahu Ta'ala Farajak. He is with us at every moment in our lives, and we can connect with him by doing anything, while talking, walking, and even sleeping. How is our connection with Imam different to relationships that we have with our friends and family? One difference is that we can tell our Imam anything,
things we wouldn't tell others. For example, when we have personal problems, we don't even tell our closest friends in fear that they might get angry or they won't understand. However, there is someone who will always understand and will never get angry, and that is our Imam. Imam loves us more than our parents do. He is eager to help us. In addition, we also know that we can always trust our Imam because he has the perfect knowledge of everything. Sometimes even the wisest around us don't have the answers and solutions to our problems, but with our Imam, this is never the case. Whatever you're experiencing, he understands it perfectly and knows exactly the solution. He knows us better than we know ourselves. Never forget that the Imam is your best friend. He can support, protect, and guide you more than anyone else can. We just have to build our connection with him, so whenever we need to, we can turn to him in need. How to connect with our Imam? One special way that we can connect to our Imam is by writing letters to him. These special letters are called arizas. People usually do this on his birthday, the 15th of Sha'ban, but you can write a letter any day of the year. The Imam receives this letter and knows that what you have written on it before even you send it. You can write anything on this letter, your hopes, your fears, worries, wishes, and prayers. Inshallah, with the permission of Allah, the Imam will grant you whatever you ask for. Another way we can connect with our Imam is by simply calling out for him, especially during difficult times, because Imam can be anywhere and everywhere whenever we are in need. We can call to him by calling out, Ya Mahdi adrikni, Oh Mahdi, help me. This is one of the best ways to call upon our Imam. Another way we can connect with our Imam is by connecting with his lovers, our fellow believers. One day, Prophet Muhammad was sitting in the Majlis talking to people about Imam Mahdi. He told them that during the time of our 12th Imam, people would not be able to see him physically, but they will still be able to have a connection with him. Hearing this, one of the companions asked, how could we have a connection with the Imam that we can't see? The Prophet answered that one will be able to have a connection with him by having a connection with the lovers of the Ahlul Bayt. So, if we want to have a connection with our Imam, one way to do this is to be connected with each other. The Prophet told them that in the time of our Imam's ghaibah, the believers must closely connect to one another and look after one another. If one important way to connect with our Imam is by connecting with his followers, we need to learn how to know and create and maintain those connections. Most of us already have those connections and friendships with other followers like ourselves. Alhamdulillah. So now, the most important thing is to avoid things that break those connections. For example, we should avoid saying hurtful things to each other. But imagine that your friend does or says something that hurts you. How would you react? Many times, people would stop talking to them and ignore them or have a fight. But why does this happen? One major reason is shaitan. He whispers to us and wants us to turn against one another and see each other as enemies. But this isn't good. Of course, there are times when our friends or family do say bad things that hurt us, but that does not make us our enemies. It simply means that you need to talk to each other and resolve the issues peacefully. Not talking and deciding to leave that person is exactly what shaitan wants us to do. He wants to ruin our friendships and make us ignore one another. In the Quran it says, surely shaitan creates fights between the believers. Surah number 17, ayah number 53. We must be careful not to listen to his whispers and always communicate with one another about how we feel and what bothers us. When we do this, we are able to understand one another and fix the problems between us. Inshallah. The best gift for a friend. Speaking of friends, what's a best friend? What makes someone a true friend? A true friend is someone who brings you closer to Allah, since that is our ultimate purpose after all. One day, Imam as-Sadiq was giving a speech in Masjid al-Nabawi to an audience that was made up of all kinds of people, old, young, rich, poor, Arab and non-Arabs, and etc. There was a young boy who was in the audience. He was around 12 or 13 years old. His name was Hashim bin Hakam. He stood up and asked the Imam, what is the best gift that I can give to a friend?
The sixth Imam smiled and told him, "MashaAllah, you're so great, brave and intelligent." He then said, "The best gift that you can give to others is to show them their flaws and shortcomings." What? The best gift we can give someone is to tell them what's wrong with them? How does this mean? Does this mean that you should point out every single little mistake that anyone does? No, of course not. First of all, we must focus on our own mistakes and not search for others. And then what the Imam means is that when you see your friend struggling or you see an area where they can improve, for example, he or she does not share well with others or is impatient, you must help them by kindly pointing out to them in secret. To tell them in secret is very important. We should never expose our friends' problems or make them feel bad in front of another, just as you wouldn't want them to do that to you. We must also know that you should tell them you're telling them this in secret. And you should tell them that this is like in a friendly gesture. Just how as a construction worker finds all the flaws in a building so he can make it stronger. That is a true friendship. We pray that Allah gives us good friends and helps us to become even better friends, especially when it comes to befriending our Imam Zamana. Please repeat after me. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Matam Hussein. Everyone, please form a circle. First, can I please have Mahdi Raza to read a Noha? Stand here. Salawat. Jali as-Saghar ja, 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 Hai Jali as-Saghar ja, Hai Jali as-Saghar ja. आशूर की दिन अली असगर को मारो रो के ही समझाती है तुझे आखिरी जंगल रना है आशूर के दिन अली असगर को मारो रो के ही समझाती है तुझे आखिरी जंगल रना है तुझे लाज मेरी रखना है तुझे बाबा संग जाना है तुझे आखिरी जंगल रना है इस दिन के लिए ही माँ तेरी तुझे करबो बला में लाई थी इस दिन के लिए ही माँ तेरी तुझे करबो बला में लाई थी इस दिन के लिए ही बेटा तुझे नासिमा ने पाला तुझे आखिरी जंगल रना है जाली असगर जा जाली असगर जा है जाली असगर जा आशूर की दिन अली असगर को मारो रो के समझाती है तुझे आखिरी जंगल रना है
तू माँ का राजा दुलारा है, तू सबके आँख का तारा है। तू माँ का राजा दुलारा है, तू सबके आँख का तारा है। तू शेर खुदा का पोता, तेरे नाम अली है बेटा। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। आशूरा की दिन अली असगर को मारो रो के समझाती है। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है, तुझे लाज मेरी रखना है, तुझे बाबा संग जाना है। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। आलाल तेरे कपड़े बदलो, मकतल के लिए तैयार करो। आलाल तेरे कपड़े बदलो, मकतल के लिए तैयार करो। आ चेहरा चूमो तेरा, जी भर की देख लू बेटा। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। जाली असगर जा, जाली असगर जा है, जाली असगर जा। आशूरा की दिन अली असगर को मारो रो के समझाती है। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है, तुझे लाज मेरी रखना है, तुझे बाबा संग जाना है। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। कभी गोद में ज़ैनब लेती है, कभी प्यार सकीना करती है। कभी गोद में ज़ैनब लेती है, कभी प्यार सकीना करती है। खैमों में शोहे बरपा, तू सबकी दुआ लेता जा। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। आशूरा के दिन में अली असगर को मारो रो के समझाती है। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। आशूरा के दिन में अली असगर को मारो रो के समझाती है। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। तुझे राज मेरी रखना है, तुझे बाबा संग जाना है। तुझे आखिरी जंगल लड़ना है। जाली असगर जा, जाली असगर जा है, जाली असगर जा है, जाली असगर जा। सलावत मोहम्मद या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। Now I'd like Ayan and Ali to read in Laha. Quiet. जबरदस्त से चली मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी। जबरदस्त से चली मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी। आले राम ने कहा और जिंदा ने कहा, ये बहन गई हुई तू नाया गाजी। जबरदस्त से चुनी मैं सदा देती रही, तू नाया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तोड़े, तेरे बाजू ना कटे चले मशकी जाच दे, ये मगर ना सका तेरे बाजू हाँ जुदा।
ही तू ना आया गाजी जबरेदा सर से चनी मैं सदा लेती रही तू ना आया गाजी धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था ये बरन मेरा सर इस बहन को बाखुदा तुझसे दस्ती बदी तू ना आया गाजी जबरेदा सर से चली मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आ गए शाम आलम लुट गए हरम रायती हुई हो गया कंदालम बुझने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली तू ना आया गाजी जबरेदा सर से चनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी सलवात Can I please have Armin for Noha? Can I please have Armin for Noha? Armin? Okay. Can I please have Faham Hasnan for Noha? Faham Hasnan. Faham Hasnan. Sayyid Zain. गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शेकर बोबला सारे आलम में कयामत का था एक शोर बापा दर्द में डूबी हुई आई ये कमा की सदा हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन हाय मजलूम हुसैन असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन ये मोहम्मद का नवासा अली का बेटा क्या खता है मेरे बेटे की बताओ तो जरा जालिमों क्यों इससे बेजर्म खता गहरा है हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन हाय मजलूम हुसैन असरे आशूर मेरा लाल बड़ा प्यासा है हाय मजलूम हुसैन मेरा मजलूम हुसैन
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.